Okay, students, so let's get started with O-level physics, May June 2023, paper 1, variant 1, 1 hour का paper है, ठीक है? So a student wishes to measure directly the circumference of a ball. What is the most suitable instrument to use? देखो, circumference of a football is what? Is a curved surface. Circumference of a football is a curved surface. You cannot use a clock for that. You cannot use a micrometer for that. You cannot use a ruler for that. What you can use is a measuring tape. Measuring tape हमेशा curved surfaces के लिए use की जाती है बेटा. Hence why 20 question 1 का answer is B. Which equation contains two vector quantities? अच्छा जी, किस equation में दो vector quantities हैं? Let's see that. Let's see कि किस equation में आपके पास दो vector quantities हैं. Perfect. Acceleration is equal to change in velocity over time. Acceleration is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. A is your answer. This equation A contains two vector quantities. Let's further move ahead. Question 3 पे आ जाओ. Forces of 6 Newton and 8 Newton, okay, act as shown. Which diagram shows the resultant of the two forces? Can you humbly realize this is the head of the vector, this is the tail of the vector, this is the tail of the vector, this is the head of the vector. Currently, both the tails are connected together. Tail आपस में connected है. Head to tail rule is not being satisfied. So bring this 8 Newton का vector towards the top side like this. Simple. This is your head. This is your tail. Now your head and tail are connected together. Can you mark the resultant vector? Yes. From the tail towards the head. This is your resultant vector. Any options like that? A is your answer. Perfect. A speed time graph for the journey of a car is shown. Okay, so a speed time graph for the journey of a car is shown. What is the distance time graph for the journey? You have to tell the distance time graph for the journey. Can you realize your first region in this region? Can you realize in this yellow highlighted region, that is region A, what is happening? You have a increasing velocity. आपकी velocity क्या है? Positive and increasing. अब बेटा, क्या आपको ये बात याद है? Gradient of distance time graph is equals to speed, है ना? Gradient of distance time graph क्या हुआ करता था? Speed. In the yellow highlighted region, in the region A, let me write it region A, your speed is what? The speed is positive and increasing. That means your gradient will also be what? Positive and increasing. If your gradient is positive and increasing, which type of a graph do you draw? बेटा, ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है तो एक इंक्रीजिंग कर्व बना लो फॉर रीजन ए. In which diagram do you have an increasing curve in B and in D? A and C get cancelled out. B और D में आपके पास increasing curve है here and here. Now let's further move ahead to region number B. अब इसको देखते हैं, blue highlighted region. Can you realize in this region your velocity is positive and constant? Velocity या speed आपकी region B में क्या हो गई? Positive and constant. Region B में your velocity is positive and constant. That means what? Your gradient will also be positive and constant. If your gradient is positive and constant, you will draw an upward sloping line like this. B is your answer. Simple. Let's further see this. The gravitational field strength on Earth is 9.8. The gravitational field strength on Mars is 3.7. The difference between the weight of an object on Earth and the weight of the object on the Mars is 25 Newton. What is the mass of the object? ठीक है. So beta, let's say let the mass of the object be m. हम कह देते हैं कि भाई mass of the object जो है वो m है. Let's say okay. अब weight on earth किस तरह से आएगा? How will you calculate the weight on earth? Mass m into the gravitational field is 9.8. That is 9.8. M is equals to your weight on earth. How will you calculate the weight on Mars? Weight on Mars is equals to m into 3.7. That comes out to be 3.7 m is your weight on Mars. Now the difference between the two weights, the difference between the weight on Earth and the weight on Mars is 25
न्यूटन। ओके, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको पार्टीशन बना के। 9.8 m minus 3.7 m is equals to 25 कर देते, is equals to 25. Okay, 9.8 minus 3.7, this comes out to be 6.1. m is equals to 25. m किसके इक्वल आ जाएगा? 25 divided by 6.1. m is equals to what? 25 divided by 6.1. m comes out to be what? 4.1 kg is your m. c is your answer. ठीक है, आपका आंसर जो है इसका c आ गया। The answer to 5 is C. Perfect. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं। A student determines the density of a solid metal cube. Which piece of equipment does the student use? अच्छा जी, अब देखो solid metal cube की आपने density निकालनी। What is the formula of density? Density is equals to mass over volume. Mass आप किससे measure कर सकते हो? Using a beam balance. So C or D option gets cancelled out. Can you realize you have a cube? बेटा क्यूब का वॉल्यूम किससे मेजर कर सकते हो? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ रूलर। बी will be your answer. Perfect. The diagram shows the only two horizontal forces acting on a trolley that is accelerating at 0.12 meters per second square. What is the mass of the trolley? आपने mass of the trolley निकालनी। Can you calculate the resultant force? Yep. 6 minus 3.6, resultant force क्या आ जाएगी? 2.4 न्यूटन। अब रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? एम ए इज इक्वल टू 2.4। एक्सेलरेशन क्या है? 0.12। 0.12 इज इक्वल टू 2.4। मास क्या आ जाएगा? 2.4 डिवाइडेड बाय 0.12। निकालो मास क्या आता है? डिवाइडेड बाय 1.2। मास कम्स आउट टू बी 20 kg. सी इज योर आंसर। ठीक है, मास कम्स आउट टू बी 20 kg. सी इज योर आंसर। ओके, अब नेक्स्ट सवाल को देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। A spring is stretched to different lengths by a variable force. The graph shows how the force depends on the length to which the spring is stretched. ठीक है, force versus length का ग्राफ गिवन है। What is the spring constant K of the spring? How can we calculate spring constant? बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो फोर्स इज इक्वल टू के ई इज योर हुक्स लॉ? ठीक है, जब आपने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, योर लेंथ गोज फ्रॉम 10 टू 15। जब आपने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, योर लेंथ गोज फ्रॉम 10 टू 15। व्हाट इज द एक्सटेंशन? 15 minus 10, that is equals to 5 centimeter. So when the force is 2 Newton, your extension is 5 centimeter. Can you calculate the spring constant? Yes. F is equals to K. Force 2 है, K यहाँ पे आ गया, extension 5 हो गई। Can you calculate K? 2 divided by 5 is equals to K. That is 0.4 Newton per centimeter is your K. B is your answer to K. That is 0.4 Newton per centimeter. The answer to question 8 is B. अब आगे बढ़ते हैं। You have to calculate the weight of the beam and this entire thing is in equilibrium. बेटा इक्विलिब्रियम के दो मतलब होते हैं। इक्विलिब्रियम से ना आप दो चीजें इन्फर कर सकते हो। What are those two things? First of all, your resultant force will be equal to 0. Secondly, your resultant moment will be equal to 0. और रिजल्टेंट मोमेंट इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब होता है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ओके, सो लेट्स से द रिजल्टेंट मोमेंट इज 0, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। कैन यू रियलाइज दिस वेट, द फोर्स ऑफ वेट will cause the beam to move in which direction? बेटा वेट की फोर्स बीम को किस डायरेक्शन में मूव करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। W into 30 is equals to 30W. Then you have the 60 Newton की force. How will this turn the object? In the clockwise direction. 60 force हो गई, आपकी distance क्या हो गया? 20 plus 30, that is 50. Equate both of them. 30W is equals to 60 into 50. W की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 into 50 divided by 30. 1, 2. Your weight is equals to 100 Newton. Simple as that.
D is your answer to question number 9. आगे बढ़ते हैं भाई. A constant frictional force acts on a moving object for a short amount of time, causing the momentum of the object to decrease. Which expression is used to calculate the time for which the force acts? बेटा हमने क्या पढ़ा था? Force is equal to change in momentum over change in time. How can you calculate change in time? Change in momentum over force. A is your answer. 10 का answer is A. आगे बढ़ते हैं. A large stone, okay, is rolled onto a lorry using a ramp, okay. The length of the ramp is L. The stone is lifted by a height of H. The mass of the stone is M. The weight of the stone is W. Which expression is equal to the useful work done on the stone? बेटा वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता था? फोर्स into the distance traveled in the direction of force. Can you realize we have the vertical force of weight? Can you realize we have the vertical force of weight? Yes, W into the distance traveled, that is H. Work done क्या हो जाएगा? W into H. B is your answer. 11 का आंसर क्या हो गया बेटे? B हो गया. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. The diagram shows a burning candle. Which energy is associated with the burning candle? हमेशा burning candle में, fuel में, पेट्रोल में, गैस में किस तरह की एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी. सिंपल. An African elephant has a mass of 6,000 kg and each of its 4 feet have an area of this. Okay. The gravitational field strength is this. You have to calculate the pressure. क्या आप वेट निकाल सकते हो? यस. मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. मास क्या है? 6,000 इंटू 9.8. क्या आंसर आ जाएगा? 6,000 इंटू 9.8. आंसर आ गया आपका 58800 न्यूटन. Now this is the weight that is being applied on 4 feet. ये कौन सा वेट है जो 4 feet पे अप्लाई हो रहा है? क्या आप 1 feet के लिए फोर्स निकाल सकते हो? 5800 डिवाइडेड बाय 4. कैन यू कैलकुलेट दैट? डिवाइड बाय 4 कर दो. द फोर्स ऑन 1 feet कम्स आउट टू बी 14,700 न्यूटन. एरिया क्या है ये? कैन यू कैलकुलेट द प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया. Force is 14,700 divided by area, that is 0.2. This comes out to be what? Pressure is equal to 73500 pascals. That is 75 kilopascals. C is your answer. Which row describes the shape and volume of a liquid at constant temperature? Beta, you have to describe the shape and volume of a liquid at constant temperature. Shape तो liquid का fix नहीं होता, volume fix होता है. C is your answer. The shape of a liquid can change, but the volume cannot. Which row shows the forces and the distance between a particle and a solid, generally compared with the forces and distance in a liquid? The forces between a solid क्या होती हैं? Stronger. The distance between the particle and a solid क्या होते हैं? Smaller. Particles closer together होते हैं in solid. 15 का आंसर क्या हो गया? B. 16 पे आ जाओ भाई. An incomplete statement about the latent heat is given. Latent heat is the dash required, is the energy required to overcome the bonds between molecules and change the state of a substance. Latent heat हमेशा state of a substance change करने के लिए यूज होती है. A is your answer to 16. Simple. आगे बढ़ते हैं. A cold solid is placed on top of a hot solid. Let's say आपके पास ये एक cold solid है, उसके ऊपर आपने एक हॉट सॉलिड प्लेस कर दिया है. परफेक्ट. थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट सॉलिड टू द कोल्ड वन. व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट. दिस कुड बी एन आंसर. एनर्जी हमेशा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ ही जाती है. बी इज योर आंसर. 18 पे आ जाओ. A house is to be thermally insulated to reduce thermal energy loss and reduce fuel cost. What type of thermal insulation pays back the cost of insulation in the shortest time? अच्छा जी, cost of insulation आपको shortest time में किधर से मिलती है? देखो, if you put a double glazing, if you put a double glazing on the window, the cost of installation is $7,000. और आपको एक साल में कितनी बचत हो रही है? $400. So how many years will it take to achieve the entire cost back? How many years will it take to receive the entire cost back? 7,000 divided by 400, that is 17.5 years.
अच्छा जी, लॉफ्ट इंसुलेशन को देख लो। लॉफ्ट इंसुलेशन की इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है? 300। पर एयर सेविंग क्या है? 300। यू विल गेट योर एंटायर कॉस्ट बैक विद इन 1 ईयर। कैविटी वॉल इंसुलेशन की कॉस्ट क्या है? 700। पर एयर कितना सेव कर रहे हो? 200। दिस गिव्स यू अ टोटल पे बैक पीरियड ऑफ 3.5 ईयर्स। ड्राउट प्रूफिंग की कॉस्ट क्या है? 100। पर एयर कितना सेव कर रहे हो? 3.3 ईयर्स आपको फिर भी लगेंगे टू अचीव द पे बैक। सबसे स्मॉलेस्ट पे बैक पीरियड या सबसे जल्दी आपको पैसे कौन वापस करके दे रहा है? योर लॉफ्ट इंसुलेशन। डी इज योर आंसर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। The diagram shows two divergent rays of light from an object O being refracted from a plane mirror. Plane mirror है बेटा। प्लेन मिरर में अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज? व्हाट डिड आई टोल्ड यू? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर is same as the perpendicular distance between the image and the mirror. B is your answer. Simple. 19 का आंसर is B. Simple. आगे बढ़ते हैं बच्चों। Light is incident on a mirror at an angle of 45 degree as shown. The mirror can be rotated about an axis into the page through X. Okay. The mirror is rotated until the light is reflected back along its original path. Through which angle is the mirror rotated? अच्छा जी, मिरर को हम किस एंगल पे रोटेट करेंगे सो दैट द लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ? अच्छा, थोड़ा सा सोचो, एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है। एग्जामिनर ये कह रहा है कि इस मिरर को मैं किस डायरेक्शन में रोटेट करूं so that light keeps on traveling along its original path. If I rotate this mirror 45 degrees in the clockwise direction, the mirror will become something like this. When light rays come and hit the mirror at an angle of 90 degree, it will pass away without any reflection. C is your answer. हमेशा हमेशा याद रखो, अगर लाइट आपके मिरर को 90 डिग्री पे हिट कर रही है, इट विल पास अवे विदाउट एनी रिफ्लेक्शन अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। इज आंसर। अब आगे आ जाओ। A ray of light is incident on a plastic block in air at an angle of incidence I. Okay. The refractive index of the plastic is N. Okay, okay, okay. The ray refracts through the plastic air boundary when it reaches X. Okay. Which equation is correct? अच्छा, refractive index of plastic क्या था भाई? N. refractive index of plastic क्या है? N है। अच्छा जी, इसका refractive index N है। अच्छा, refractive index of plastic आप किस तरह निकाल सकते हो? If you realize air is your first medium यहाँ पे, plastic is your second medium यहाँ पे. This is your angle of incidence. This is your angle of refraction. You have to calculate the refractive index of plastic. That is the refractive index of second medium. You will say sine of I divided by sine of 41. क्या ऐसा कोई आंसर बन रहा है? I think there is an answer like this. One second. हाँ, इफ यू एनालाइज ऑप्शन सी, अगर आप ऑप्शन सी को एनालाइज करो, साइन 41 को नीचे ले जाओ, n इज इक्वल टू व्हाट? साइन आई ओवर साइन 41। 21 का आंसर है सी। सिंपल। आगे बढ़ते। द डायग्राम शोज व्हाइट लाइट एंटरिंग अ प्रिज्म। What happens at point X and what is the color of the light that strikes at point Z? बेटा, पॉइंट Z पे या टॉप साइड पे हमेशा कौन सी लाइट आती है? रेड लाइट। और X पे क्या होती है? रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। 22 का आंसर इज सी। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। Which row names a region of the electromagnetic spectrum with a wavelength longer than that of visible light? अच्छा जी, हमें wavelength चाहिए longer than that of visible light. इंफ्रारेड भी हो सकती है, माइक्रोवेव भी हो सकती है, रेडियोस भी हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी को कैंसिल आउट कर दो। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन विजिबल लाइट। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन विजिबल लाइट किसकी होगी? अल्ट्रावायलेट की? या दैट्स पॉसिबल। रेडियो वेव्स की? नो। माइक्रोवेव्स की? नो। सो ए इज योर आंसर।
23 का आंसर इज ए. Let's further move ahead. Sound travels at different speeds in different states of matter, which list gives the three states of matter arranged in order of speed of sound from slowest to fastest. Sound slowest travel करता है गैस में, fastest travel करता है solids में. A is your answer. In which arrangement do the bars repel? Iron के साथ तो कभी भी आपकी repulsion नहीं होगी. In option D, when there is north and north, the bars repel. Okay. A student uses a wooden clamp and a stand to hold a freely suspended bar magnet. ठीक है. In experiment one, the student holds a bar magnet next to the suspended magnet. अच्छा जी, आप bar magnet लगा रहे हो next to the suspended magnet. In experiment 2, the student holds an iron bar next to the suspended magnet. Okay, iron bar लगा दिया यहाँ पे. In experiment 3, the student holds a steel bar next to the suspended magnet. In which experiments does the suspended magnets move? भाई किस experiment में आपका ये जो suspended magnet है, ये वाला जो thread से लगा हुआ है, ये move करेगा? If you realize, जब आप बार मैग्नेट लाओगे then it will move because north and south will attract. When you will bring an iron bar close to it, this will become north south, it will also attract. When you will bring a steel bar close to a magnet, it will also either attract or repel. It will move. 26 का answer is A. Let's move on to question 27. This has been excluded from the recent syllabus, so yeah, skip this. Object X is stationary and positively charged. It experiences a force due to the field produced by object Y. ठीक है, object Y क्या है? Positive charge. क्यों? क्योंकि इसकी field lines out of the charge जा रही है. The arrow shows the direction of the field produced by object Y. Which statement about the direction on force X is correct? भाई कौन सा statement about the direction of force on X is correct? It is towards the right because it is in an electric field. हो सकता है. It is towards the left. No. It is towards the right. No, no. A आंसर होगा. 28 का आंसर is A. The diagram shows a battery of three 1.5 volt cells. What is an advantage of this arrangement? ये cells क्या है? Parallel में लगे हुए. The battery can supply a current for a longer amount of time. 29 का आंसर भी A हो जाएगा. Let's further move ahead. 30 पे आ जाओ. A potential divider consists of a light dependent resistor LDR and a resistor connected to a 6 volt battery. Okay. The output is 3 volts. ठीक है. Total battery क्या है? 6 volts की. अगर आउटपुट में 3 volts आ रहा है तो 10,000 ohm resistor को भी 3 volts मिल रहा होगा. What is the resistance of the LDR? You have to calculate the resistance of the LDR. How will you do that? बेटा अगर 10,000 ओम के रेजिस्टर को 3 वोल्ट्स मिल रहा है एंड इफ यू हैव 3 वोल्ट्स इन द आउटपुट, योर रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर विल आल्सो बिकम व्हाट? 10,000. सिंपल रेशियो मेथड. अगर 10,000 ओम के रेजिस्टर को 3 वोल्ट्स मिल रहा है तो इफ यू हैव 3 वोल्ट्स इन द आउटपुट, व्हाट विल बी योर रेजिस्टेंस? एक्स इज इक्वल्स टू 10,000 ओम. सिंपल रेशियो मेथड. 31 पे आ जाओ बेटा. Three students each suggest a consequence of wiring lamps in parallel rather than in series. Which statements are correct? अगर parallel में आप lamp लगाते हो, if one lamp breaks, the other lamp stays lit. Yeah, this is correct. The lamps can be switched on and off separately. No, that is not possible. No, that is possible. That is possible in parallel. हाँ जी. Parallel में आप lamps को switch on and off separately कर सकते हो. The potential difference across each lamp is equal to the potential difference of the entire supply. Yeah, that's correct. 31 का answer will be A. Perfect. Okay. When wire XY is moved downwards, अच्छा जी, आप force कहाँ लगा रहे हो? Downwards. Okay. Between the poles of a stationary magnet, an EMF is produced across XY. Which action produces an EMF across XY in opposite direction? Force आप ऊपर लगाना शुरू कर दो. The wire is moved upward and the magnet is kept stationary. 32 का answer is D. Simple. अच्छा जी, an AC voltage is displayed on an oscilloscope screen. The Y gain is this. What is the maximum value of the voltage? First of all, can you make the mean position? Mean position बना सकते हो, equilibrium position बना सकते हो बेटा. Equilibrium position या mean position क्या होती है? A position or a line that cuts the wave into two equal halves. अब क्या आप देख सकते हो कि मीन पोजीशन से 1
एंड 2, दो बॉक्सेस ऊपर आपका क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज. ईच बॉक्स ऑन द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, 2 वोल्ट्स. तो दो बॉक्सेस कितना वोल्ट रिप्रेजेंट करेंगे, 2 into 2, 4 वोल्ट्स. बी इज योर आंसर. अब आ जाओ 34 पे. The results of scattering experiment show that a very small nucleus consists most of the matter in an atom. What is scattered in this experiment? Alpha particles. Easy. Atoms P and Q are isotopes of the same element. Isotopes होते हैं तो प्रोटॉन नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं. सी इज योर आंसर 35 का. Let's further move ahead. The nucleus of an atom emits an alpha particle. How do the proton number and nucleon number change? प्रोटॉन नंबर क्या करता है, डिक्रीज बाय 2. न्यूक्लियन नंबर क्या करता है, डिक्रीज बाय 4. 36 का आंसर इज ए. सिंपल. अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है, द डायग्राम शोज हाउ द थिकनेस ऑफ अ पेपर इज मेजर्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर. इफ द शीट इज टू थिक, फ्यूअर बीटा पार्टिकल्स कैन रीच द डिटेक्टर. ओके. व्हाई आर बीटा पार्टिकल्स यूज फॉर दिस पर्पस? क्योंकि बीटा पार्टिकल्स, अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स विल बी ऑल स्टॉप बाय वेपर. हाँ सही कह रहे हो भाई. बीटा पार्टिकल्स हम क्यों यूज कर रहे हैं इसके, बिकॉज बीटा पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द शीट ऑफ पेपर. अल्फा पार्टिकल्स तो क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे बाय द शीट ऑफ पेपर. A sample of tritium has a mass of 32 milligrams. The half-life is 12 years. How much of the sample of tritium decays in 36 hours? बेटा देखो, इनिशियली आपके पास 32 मिलीग्राम्स है. 12 साल के बाद, 12 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, ये 16 मिलीग्राम्स हो जाएगा. आफ्टर फर्दर 12 ईयर्स ये क्या हो जाएगा, 8 मिलीग्राम्स. आफ्टर फर्दर 12 ईयर्स ये क्या हो जाएगा बेटे, 4 मिलीग्राम्स. इनिशियली आपका जो ट्राइट्रियम था वो कितना था, 32 मिलीग्राम्स. अब आपका ट्राइट्रियम कितना हो गया, 4 मिलीग्राम्स. हाउ मच ट्राइट्रियम हैज डिकेड, 32 माइनस 4, that is equals to 28 milligrams. 28 milligrams of tritium has decayed. D is your answer. 38 का आंसर क्या है, डी. चलो आगे बढ़ते हैं. It takes 27 days for the moon to orbit the earth. The average value of the moon's orbit is this. What is the average orbital speed? Orbital speed का क्या फॉर्मूला लिखवाया था, v is equals to 2 pi r over capital T. r की वैल्यू आपको पता चल गई. yes, 3.8 into 10 raised to the power of 8. What is the value of time? 27 days, 27 into 24 hours into 60 minutes in each hour into 60 seconds in each minute. What does your answer of orbital speed comes out to be? 1000 meters per second. B is your answer. What is the nuclear reaction that takes place in stable stars? Stable stars में हमेशा क्या आकर करता है, फ्यूजन आकर करता है ऑफ हीलियम इनटू हाइड्रोजन. ओ सॉरी, फ्यूजन आकर करता है ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम. माय बैड. For smaller molecules create bigger molecules. 40 का आंसर is D. I hope this marks the end of the paper. If you have any questions, you can ask in the comments.